Now let us start. Myself, Dr. Sheikh Rafiq, Head Department of Botany, Milia College, Bid. We have to see paper second. The title of the paper second, that is Morphology of Angiosperms. And as an introductory part, we have seen what is the morphology of angiosperms and what we have to see in the syllabus. In this first lecture, we have to see about diversity of plant forms. Diversity of plant forms. Here, in this case, on the basis of size and shape, plants are divided into three categories. On the basis of size and shape, plants are divided into three categories. That is, number one, herbs, number two, shrubs, and number three, trees. Herbs, shrubs, and trees. These are three categories of plants. So in this case, we have to see first category, that is herbs. What is herb? Herb is nothing but the plants which are having soft, green, and perishable stems. The plants which are having soft, green, and perishable stems are nothing but herbs. They are grouped under herbs category. The first category, that is herbs. अब हर्ब्स के अंदर कौन से प्लांट आते हैं? ऐसे प्लांट जिसका स्टेम सॉफ्ट है, ग्रीन है और पेरिशेबल है, दैट इज डेलिकेट और कंज्यूमेबल स्टेम है. ऐसे प्लांट को अपन क्या बोलेंगे? हर्ब्स बोलेंगे. और ऐसे टाइप के प्लांट्स को हर्ब कैटेगरी के अंदर रखना है आपको. दे आर जनरली स्मॉल इन साइज. हर्ब्स कैटेगरी के प्लांट क्या है? दे आर स्मॉल इन साइज, नॉट मोर देन 1 मीटर इन हाइट. उनकी हाइट क्या है? 1 मीटर से ज्यादा नहीं हो सकती. 1 मीटर से ज्यादा हाइट नहीं है. ऐसे प्लांट को क्या करे हुआ है? हर्ब्स कैटेगरी के अंदर इंक्लूड करे हुआ है ना. एंड मे लिव फॉर 1 to 2 सीजन्स. और उनकी लाइफ क्या है? 1 to 2 सीजन्स, नॉट 1 to 2 years, not 1 to 2 years, but the life of herbs are 1 to 2 सीजन्स. मीन्स एक साल में 2 सीजन भी हो सकते, एक साल में 4 सीजन भी हो सकते. तो ये हर्ब्स प्लांट की, हर्ब्स कैटेगरी में जो प्लांट आते उसकी लाइफ क्या है? 1 से 2 सीजन तक की लाइफ है. एग्जाम्पल क्या है उसका? ग्रासेस आर इंक्लूडेड अंडर हर्ब्स. wheat, rice, mint, these are the plants, the examples of herbs. They are included under category herbs. Means here in this case, in case of wheat, mint or grass, the height of the plant is not more than 1 meter, and the stem of these particular plants are soft है, green है और perishable है ना. एंड सीजन उनकी लाइफ क्या है? 1 सीजन की है. ग्रास की लाइफ 1 सीजन है, वीट की लाइफ 1 सीजन है. मींस द प्लांट्स व्हिच आर ग्रुप्ड अंडर हर्ब्स, द लाइफ ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लांट्स आर 1 to 2 सीजन्स. यस, जनरली दे आर स्मॉल एंड दीज आर द 3 एग्जांपल्स, दैट इज ग्रास, मिंट एंड वीट. तो इट इज नथिंग बट हर्ब्स. व्हाट इज हर्ब? हर्ब्स आर नथिंग बट the plants which are having soft, green and perishable stems. They are generally small in size, not more than 1 meter in height, and the life of that particular plants are not more than 1 to 2 seasons. And these are the 3 examples of herbs. Now we have to see the second category, that is shrubs. That is shrubs. श्रब्स बोले तो क्या है? प्लांट्स विथ वुडी स्टेम. प्लांट्स विथ वुडी स्टेम मींस ऐसे प्लांट जिसका स्टेम वुडी इन नेचर. उसका नेचर क्या है? वुडी है. विथ ब्रांचेस ऑफ ऑलमोस्ट इक्वल साइज. यहां पर क्या है?
the branches of that particular plant, they are almost equal in size and arising from the stem immediately above the soil. जनरली क्या होता है, ब्रांचेस क्या है, इमीडिएटली सॉइल के ऊपर से ओरिजिनेट नहीं होते, जैसे जैसे हाइट बढ़ेंगी वैसे वैसे अलग अलग ब्रांचेस फॉर्म होते हैं स्टेम के ऊपर. दैट इज नॉट श्रब, that is not shrub. But in case of shrubs, all the branches are of equal size and they arise from or near the ground, immediately from or near the ground or soil. जमीन से चिपक के एक जैसे पूरे ब्रांचेस ओरिजिनेट होना एक साथ, उसमें मेन स्टेम आइडेंटिफिकेशन का भी प्रॉब्लम आ सकता है अपने को, कौन सा मेन स्टेम है, कौन से लैटरल ब्रांचेस है. ऐसे क्या हो रहे हो, जमीन के ऊपर से, जमीन के जब ऊपर आ रहे हैं तो पूरे ब्रांचेस एक साथ ओरिजिनेट हो रहे हैं ना, एग्जैक्टली अबव और नियर द ग्राउंड और सॉइल, एंड दे आर ऑल इक्वल इन साइज. सबके साइज क्या है पूरे ब्रांचेस की, इक्वल है. सच टाइप ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड एज श्रब्स, और सच टाइप ऑफ प्लांट्स आर ग्रुप्ड अंडर द कैटेगरी दैट इज श्रब. यस, दे लुक लाइक bushes. The plants which are categorized under shrubs, they looks like bushes and are medium sized plants, and the size of particular plant are medium size ना. जो भी प्लांट श्रब क्या कैटेगरी में है उसकी साइज क्या है, मीडियम साइज है. उसके पूरे ब्रांचेस जो है तो क्या है, एक साथ जमीन से चिपक के जमीन के ऊपर से ओरिजिनेट हो रहे हैं, और उसका स्टेम क्या है, वुडी इन नेचर है, और पूरे ब्रांचेस की साइज सेम है, और दे लुक लाइक bushes. Such types of plants are categorized under shrubs. They survive for many years. जैसा herbs के अंदर क्या देखा अपन ने, the life of herb plant or herbs are 1 or 2 season, but here the life of shrubs are many years. The life of shrubs are many years, or they survive many years, though less than trees, but less than trees. The life of tree is more than the life of shrubs. The life of shrub is more than life of herbs. Herbs plant की लाइफ जो है तो 1 से 2 सीजन की है, और shrubs की जो लाइफ स्पैन है, लाइफ है तो वो क्या है, many years की है. But the life of shrubs more or less than trees, मतलब हर्ब्स की लाइफ साइकिल कम है, उससे ज्यादा श्रब्स की है, और उससे ज्यादा ट्रीज की है, जो थर्ड कैटेगरी है ना. हियर द लाइफ ऑफ श्रब्स आर मेनी इयर्स, दो लेस देन ट्रीज, अगर क्या है, ट्री से कम है. फॉर एग्जांपल चाइना रोज, लेमन, नेरियम है ना. चाइना रोज दैट इज जासवंत, लेमन दैट इज नींबू, और नेरियम दैट इज कनेर है ना. This is the figure of Kaner, and Kaner or Nerium indicum is categorized under shrubs, means habit of this particular plant, that is Nerium or lemon or China are shrubs. These all 3 plants, for example, are grouped under category second, that is shrubs. ये हो गए कैटेगरी सेकंड. फर्स्ट कैटेगरी क्या देखे अपन ने, श्रब्स. सेकंड कैटेगरी क्या देखे अपन, सॉरी फर्स्ट कैटेगरी क्या देखे, हर्ब्स, सेकंड श्रब्स. नाउ वी हैव टू सी दैट इज थर्ड कैटेगरी. इन दिस कैटेगरी the third category is nothing but trees, means the plant depending on size and shape of plant, they are categorized into 3 categories. Number 1 herbs, number 2 shrubs, and number 3 trees. Trees are tall and big plants. Trees are tall and big plants. Yes, and have one hard woody stem called trunk. Trees को क्या है, एक हार्ड वुडी स्टेम है, और वो स्टेम को क्या बोलेंगे अपन, ट्रंक. लुक एट दिस फिगर, इट इज द फिगर ऑफ ट्री है ना. हियर इट इज हैविंग ए हार्ड एंड वुडी ट्रंक. दिस इज नथिंग बट ट्रंक ना, एंड it is woody in nature na. Then it bears woody branches. This stem bears these branches. These are also woody in nature. These are also woody in nature. Yes, twigs. Twigs means these are the flowering twigs or leafy twigs
है ना. Then leaves at some distance, means this trunk bears leaves, branches at some distances, yes, above the ground, ground के ऊपर, not from or near the ground, but it bears branches and twigs or leaves from above the ground, yes. Then coconut and palm, for example, coconut and palm are also trees. Yes, coconut and palm are also trees. Yes, but they do not have branches. Coconut tree and palm tree are without branches, means they do not having any type of branch, but they are also included under this category, that is trees. Yes, then trees generally survive for many years. है ना, trees का life क्या है, many years का है. For example, mango, neem, palm, banyan, etc. मतलब these are the examples. Neem है, palm है, banyan है ना. Then number of examples are there which are included under category of trees. Yes. So this is the third category. So these are three major categories of plants. That is herbs, shrubs, and trees. Yes. Now we have to see about the climbers. This is next category, that is climber. Climbers क्या है, नाम से समझ में आना चाहिए इसका. क्लाइंबर बोले तो क्या है ना, नाम से क्या है ये समझ में आना चाहिए. व्हाट इज क्लाइंबर, है ना. क्लाइंबर इज नथिंग बट प्लांट्स विथ थीन एंड लॉन्ग स्टेम्स. ऐसे प्लांट जिसका स्टेम थीन एंड लॉन्ग है. यस. देन the branches are diffuse in nature. Diffuse branches are there. Diffuse branches are there, and special organ of attachment are present on the climbers. Special type of organs which are used for attachment, they are present on climbers, by means of which it clings to the neighboring object. By means of which it clings to the neighboring object. Yes. So this a special type of organ with the help of which the plant or the climber clings the neighboring object are called as tendrils. Are called as tendrils. Such type of organs are called as tendrils. And for example, grapevine, pea, these are the examples of climber. Yes. सुने आ रहा है क्या मुस्कान? मुस्कान आ रहा. हाँ, तो ये समझ में आ रहा ना, व्हाट इज क्लाइंबर. क्लाइंबर्स आर थीन एंड लॉन्ग स्टेम्स. मतलब क्या है, पतले है, थीन है, लॉन्ग स्टेम है उनका. नंबर ऑफ ब्रांचेस आर प्रेजेंट, बट these climbers are having special organs which are present on the plants, and with the help of which the plants can cling to the neighboring object. Neighboring object क्या हो सकता है, any neighboring object, whether it is wall, whether it is door, whether it is whatever it may be. Yes, जो भी ऑब्जेक्ट है, नेबरिंग ऑब्जेक्ट में तो कुछ भी हो सकता है जिसके ऊपर ये प्लांट क्लिंग्स करता है, ऊपर चढ़ता है, with the help of special organ of attachment. And this special organ of attachment is called as tendril. Like this, it is nothing but tendril. This is the special organ of attachment, and with the help of this organ, this plant clings the neighboring object. Yes, and this is nothing but tendril. Yes, so it is the climber. Then we have to see about annuals, perennials and biennials, है ना. अब अपने को क्या देखना है, एनुअल प्लांट क्या है, बाइनियल्स क्या है, और पेरेनियल्स क्या है ना. एनुअल प्लांट्स आर नथिंग बट द प्लांट्स व्हिच लिव फॉर ओनली वन सीजन इन ए ईयर. द प्लांट्स which live for only one season in a year, such type of plants are called as annuals. Annual plant किसको बोलेंगे, एक प्लांट है जिसका लाइफ साइकिल एक सीजन में खत्म होता है. जिसका लाइफ साइकिल एक सीजन में खत्म होता है. अब एक सीजन क्या है, वो 4 महीने का हो सकता है, 6 महीने का हो सकता है, 1 साल का हो सकता है ना. एनुअल बोले तो क्या, एक साल में, एक सीजन में लाइफ साइकिल खत्म होना प्लांट की, उसको बोलेंगे अपन एनुअल्स.
For example, wheat, rice, maize. These are the examples of annuals. एक साल में लाइफ साइकिल खत्म होना, इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल एक सीड है, एक सीड अपन जमीन में डाला, जमीन से प्लांट निकल गया, प्लांट को फ्लावर्स आ गए, प्लांट को फ्रूट्स आ गए, और प्लांट की लाइफ साइकिल वहां पर खत्म हो गई, उसके बाद उसका कोई शॉर्ट नहीं है. तो सच टाइप ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड एज एनिमल्स. मींस सीड टू सीड, सीड टू सीड, सीड देना सीड लेना, यहां तक उसकी लाइफ साइकिल एक साल में या एक सीजन में खत्म होना, उसको बोलेंगे अपन एनिमल्स. तो उसके एग्जाम्पल क्या है? वीट है, राइस है, मेज है, जवार है, बाजरा है. नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स आर देयर, बट वी आर हियर मेंशन 3 एग्जाम्पल, दैट इज wheat, rice and maize. So it is the plan all about annuals. Then next we have to see, that is biennials. What is biennials? Biennials are nothing but the plants which complete their life cycle from seed to flowering in 2 years. In 2 years. That these plants are called as biennials. Yes, in the first year, they bear vegetative parts, that is root, stem and leaves. And in the second year, they bear flower, fruit and seed. In the second year, they bear flower, fruit and seed. Such type of plants are called as biennial plants. अब biennial में क्या है? एनुअल प्लांट में लाइफ साइकिल एक सीजन में खत्म हो रही है. बाइनियल में क्या हो रहा? दो साल द प्लांट्स व्हिच कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल 2 years, मतलब एक लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए उनको 2 साल लग रहे हैं. 2 साल में उसकी एक लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है. यस. तो व्हाट इज द 2 साल में कैसे कंप्लीट होती? इन फर्स्ट ईयर दे प्रोड्यूस और दे बियर वेजिटेटिव पार्ट्स, दैट इज रूट्स, stems and leaves. And in second year they produce or they bears the floral parts, that is flowers, fruits and seeds. These are the difference between annuals and biennials. Yes. For example of biennials, they are carrot, turnip, potato, radish. These are the examples of biennials. Then lastly we have to see perennials. Lastly we have to see perennials. What is perennials? These are the plants which live for several years and bear flower, fruit and seed every year. Means in short, the life cycle of perennial is from year to year. Means they produce or bear flowers, fruit and seeds every year. For example, mango, neem. मैंगो का प्लांट अगर आपने लगाए तो मैंगो का प्लांट लगाने के बाद एक बार मैंगो देगा अपने को, जब भी उसका फ्लावरिंग सीजन आएगा और मैंगो मिलेगा, तो मैंगो मिलने के बाद उसकी लाइफ साइकिल खत्म नहीं होगी. फिर नेक्स्ट ईयर आपको फ्लावर देगा, फिर आपको जो है तो फ्रूट देगा, फिर तीसरे साल मैंगो अपने को फ्रूट देगा, फ्लावर देगा. ऐसा मतलब द पेरिनियल प्लांट लाइफ साइकिल ऑफ पेरिनियल्स आर फ्रॉम ईयर टू ईयर. मतलब उसकी लाइफ साइकिल एक साल में 2 साल में कंप्लीट नहीं होती है ना. सम पेरिनियल्स में लिव फॉर 100 ऑफ इयर्स. कुछ पेरिनियल प्लांट की क्या है लाइफ साइकिल? 100 ऑफ इयर्स, हंड्रेड्स ऑफ इयर्स. एंड फॉर एग्जांपल पीपल, नीम, बनियान, है ना. पीपल का लाइफ साइकिल लाइफ स्पैन क्या है? हंड्रेड्स ऑफ इयर्स और मोर देन 100 इयर्स. देन नीम का लाइफ साइकिल मोर देन 100 इयर्स. देन बनियान का लाइफ साइकिल मोर देन 100 इयर्स. So these are the basic differences between annuals, biennials and perennials. Annual means plants which complete life cycle in one season and in 1 year. Then biennials means the plant which complete its life cycle in 2 years. In 2 years, in first year or first season, they may produce vegetative parts, that is root, stems and leaves. And in second year, they produce or they bear floral parts, that is flower, fruits and seeds. So it is biennials. And perennials, the life cycle of perennials are from year to year. They produce or they bear flowers and fruits every year. Every year. Some plants of perennials are of many years or more than 100 years of lifespan. No? So it is all about annuals, perennials and biennials. Now
In this case, in this chapter, diversity of plant forms. Diversity of plant forms में अपन क्या देखे? Herbs, shrubs, trees, climbers. These are the categories of plants. Herbs बोले तो क्या? It is the soft stemmed plant, perishable stemmed plant, है ना? Then the height of the plant, that particular plants are not more than 1 meter, not more than 1 meter. That is as the herbs habit, herb plant. Then second, that is shrubs. Shrubs में क्या देखे अपन ने? प्लांट्स का स्टेम क्या है? वुडी है ना? विद ब्रांचेस ऑफ ऑलमोस्ट इक्वल साइज के ब्रांचेस है इतना, अराइजिंग फ्रॉम द स्टेम इमीडिएटली from the soil or the ground. Such type of plants are called as shrubs. Yes, they look like bushes. Shrubs look like bushes and medium-sized plant. Yes, and medium-sized plants. Then they survive for many years. Shrubs survive for many years. Herbs survive for one to 2 years. Shrubs survive for many years, but not more than the trees. Yes. Then third one we have seen, that is trees. Trees में क्या है? Trees are tall and trees are tall plants which bear a woody trunk. एक ट्रंक, ट्रीज में क्या है? एक ट्रंक है, and this trunk produces lateral branches, and their lateral branches are also woody in nature. Yes, it bears twigs, it bears leaves, है ना? And it lives or survives from year to year, or the life cycle of trees are more than the shrubs. Life cycle of shrubs are more than herbs. Yes. Then we have seen, that is climbers. Climbers में क्या है? The plant with thin and long stem. Plant का क्या है? Stem thin and long है. Yes, with diffuse branches and special organ of attachment is there. Presence of special organ of attachment are present on the climbers, and with the help of this organ called as tendril, the plant or the climbers clings to the neighboring object. Yes, clings to the neighboring object. Yes, here for example pea plant, for example grapevine. Then lastly we have seen these annuals, biennials and perennials. Annuals, biennials and perennials. Yes, तो यहां तक अपना ठीक है। आप मुझे ये बताओ कौन कौन है? मुस्कान और कौन जिसके नाम है? आपका माइक जो है तो ये अनम्यूट कर दो और मुझे बात करो आप कि आपके ये समझ में आ रहा है क्या, और इतनी स्पीड ठीक है क्या? मुस्कान, मुस्कान। हेलो सर। हाँ, आपका मैं जो अभी पढ़ाया तो आपके समझ में आया क्या? हाँ हाँ आ रहा। इतनी स्पीड ठीक है क्या? स्पीड बढ़ाना है पढ़ाने की, क्या कम करना है? नहीं सर, सेम चलन दो, अच्छा पढ़ा है। अच्छा है, ठीक है। और कौन है नेक्स्ट? कितने पार्टिसिपेंट है इसमें? हाँ जी सर। आवाज कट के आ रही थी सर। अच्छा, क्या नाम है आपका? नाम बताओ। सदफ। 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 अच्छा, तो आपके आवाज कट के आपको समझ में नहीं आया समझो? हाँ, कुछ मतलब समझ में आ गया लेक्चर, लेकिन कुछ कट कर आवाज आ रही थी। अच्छा, ठीक है। और नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट। यस सर। आपके समझ में आया? क्या नाम है आपका? बुशरा है सर। हाँ, बुशरा नाम है। बुशरा। आपके समझ में आया बेटी? हाँ सर, कुछ कुछ समझ में आया। अच्छा, स्पीड आवाज आ रही थी? आवाज कट नहीं सर, बीच बीच में कट कट के आ रही थी और बाद में सही आ रही थी। अच्छा, तो समझ स्पीड ठीक है फिर अपनी? यस सर, ठीक है। ठीक है, तो ठीक है। अब अपन, आपके नेट का प्रॉब्लम हुआ क्योंकि मेरे पास तो नेट अच्छा चल रहा है अभी फिलहाल, है ना? जी सर। हाँ, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब नेक्स्ट टाइम अपन अच्छा चले करें, अच्छा और सुनेगा आपको। आपका नेट थोड़ा अच्छा पावरफुल करो। हमारे पास तो फुल नेट है क्योंकि मेरे पास 2-3 लेक्चर होते हैं ना, तो प्रॉब्लम तो नहीं है। आपके नेट का प्रॉब्लम हो सकता, और नेक्स्ट टाइम अपन उसको और भी अच्छा करने की कोशिश करेंगे और यही स्पीड से चलन देंगे।
पीर मंगल बुध, जी सर। ये अपने 3 दिन लेक्चर्स रहेंगे, 2:30 से या 2 के बाद जो भी टाइम रहेगा। तो और एक आध दिन एक्स्ट्रा रहा तो आप खाली वो मैसेज देखते जाओ ग्रुप के ऊपर, है ना, वो ग्रुप के ऊपर मैसेज देखना और वो टाइम में यस अपने सर। ज्वाइन करना। ओके ओके, सी ओके यू, सर। खुदा हाफिज। मंगल बुध रहेंगे सर। हाँ जी, क्या बोले? फिर मंगल बुध। पीर मंगल बुध, जुमेरात जुम्मा हफ्ता दूसरे लेक्चर से, सेकंड ईयर थर्ड ईयर के। अच्छा ठीक। ठीक है, खुदा हाफिज। यस। यस सर।